Yes, 6.1, any doubt? Say yes or no if you don't have any doubt. No, sir. Okay. We continue with DPP 6.2, the multiple correct type, 12th one. Which of the following statement is correct about action of heat on KMnO4? Before we look at the options, tell me what is the product for pyrolysis of KMnO4? Oxygen. Oxygen is released, and what are the other products? Permanganate on heating gives what along with oxygen? Manganese. Manganate, K2MnO4, and Pyrolusite. pyrolusite and oxygen. And if we further heat the manganate at a very high temperature, and that is referred as red heat, then it further breaks down into K2MnO3 along with release of oxygen. And this particular compound is called manganite. So permanganate on decomposition gives you manganate and pyrolusite. Manganate further decomposes at a very high temperature into manganite. And in both the reaction, there is a release of oxygen gas. Now let's look at the options. First one, the reaction is a disproportionation reaction. Is this a disproportionation reaction? Is this a disproportionation reaction? Yes, sir. How? Mn changes from +7 to +6 and +4. Disproportionation means a reaction in which the element undergoes oxidation as well as reduction. Here the +7 is reducing to +6 and +4. It is only undergoing Reduction. reduction. So it can't be a disproportionation reaction. एंड दूसरा सिंपल हिंट है कि अगर कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है इट कैन ओनली अंडरगो Reduction. रिडक्शन. यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होने वाला ही नहीं है. इट्स नॉट पॉसिबल. So this is not a disproportionation reaction. So option A is incorrect. The purple color of KMnO4 changes to dark green. KMnO4 potassium permanganate is dark purple color and K2MnO4 जो है वो green colored compound रहता है. Yes, the purple color does change to dark green. And the final product formed is potassium manganite. Yes, there is a further breakdown of manganate to manganite. So the answer will be option B and C. Okay. The answer key given is incorrect. They have given A, B, C, but A can't be a correct option because it's not a disproportionation reaction. Now 13th. Chromium 6 has a D0 configuration. Select the incorrect statement. Incorrect. First, chromium 6 is colorless. No. No.
In fact, what is a special concept related with this? CTS. CTS. Chromium ka 6 plus doesn't have any unpaired electron, still it is colored. What's the color of chromate? क्रोमेट का कलर क्या होता है? CrO4 2 माइनस. क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों ही +6 में है ना. कोई भी ले लो, ये भी कलर्ड है, इट्स येलो कलर्ड, एंड डाइक्रोमेट इज ऑरेंज रेड. So both are colored due to the charge transfer spectra, that is CTS. तो ये अपना incorrect statement है. Due to absence of electron, it is colorless. ये भी incorrect है. The yellow color of chromate is due to DD transition. No, because it is due to the CTS concept. So option D एक ही option correct होगा. Yellow color of chromate and the orange red color of dichromate both is due to charge transfer spectra. Clear? Where there is a transfer of one electron momentarily from what to what? What type of transfer occurs in CTS? Ligand to metal. Ligand to metal. So ध्यान रहे कि this two species and the other species in the highest oxidation state and D0 configuration, if they are colored, it will be due to CTS and the transfer is from ligand to metal. 14th. During titration, H2SO4 is preferably used over HCl and HNO3 to make the solution acidic because now normally जो titrations है जिसमें KMNO4 and dichromate are used as oxidizing agents, the acidic medium is generally associated with H2SO4. तो question में बोला है कि this is preferred over HCl and HNO3. Why? Options read करते हैं. HNO3 is an oxidizing agent which react with reducing agents and therefore cannot be used in KMNO4 in acidic medium. True or false? Yes? Is it true or false? We had used the acidic medium for oxidizing agent as H2SO4. We don't prefer HCl or HNO3. Is HNO3 an oxidizing agent? Yes, sir. Yes. And it does react with the reducing agents because nitrate have a tendency to get reduced in preference to the hydronium ion. तो वो reducing agents के साथ react कर सकता है और इसीलिए KMNO4 के साथ नहीं यूज कर सकते for the acidic medium. So the option A is very well correct. Nascent oxygen produced from KMNO4 and HCl is partly used to oxidize chloride to chlorine. True. True. Because chloride यहाँ पर oxidize हो जाता है to liberate the chlorine gas, and chlorine being an oxidizing agent interferes in the titration का readings. तो titration के लिए हमेशा accuracy बहुत important होता है. तो यहाँ पर because of the interference with the formation of chlorine, it is not preferred. Hence B is also correct. H2SO4 does not react with KMNO4. Sulfuric acid में भी sulfur is in the highest oxidation state of +6. बट यहाँ पर सल्फेट का जो अनायन है वो रिड्यूस नहीं होता है in preference to the
H plus ion. इसलिए बेसिकली यहाँ पर KMnO4 और H2SO4 जस्ट कंबाइन होता है, इनके बीच में कोई रिडॉक्स टाइप का रिएक्शन नहीं होता है. So when they are talking about does not react, मतलब we have to talk about the change in oxidation number happening or not. HNO3 में होगा, HCl के केस में भी हो रहा है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड में it doesn't happen. That's why KMnO4 and H2SO4 can easily combine, form K2SO4, MnSO4, H2O and give out the nascent oxygen, which is in turn used to oxidize another species. तो C भी correct है. ये काफी important है, which clears the concepts related to the use of sulfuric acid for the acidic medium. In case of KMnO4 as well as K2Cr27, reasons remain the same. And H2SO4 does not give any nascent oxygen of its own to oxidize the reducing agent. When we have the reaction of KMnO4 with H2SO4, we had written the reaction in acidic medium giving K2SO4, MnSO4, oxidizing acid है तो H2O and nascent oxygen. So this nascent oxygen is released from KMnO4 का oxygen या H2SO4 का oxygen? KMnO4. KMnO4. बस अगर याद रहेगा तो हमने बैलेंसिंग भी जब किया था तो what we did was we balanced potassium first, तो यहाँ पे twice आया, उसके बाद Mn भी डबल हो जाएगा, उसके बाद सल्फेट्स को बैलेंस किया तो थ्राइस आया, जितना सल्फेट उतना H2O. So all the sulfates का oxygen have got incorporated into the metallic sulfates. तो यहाँ पर out of the 8 oxygen, we have 3 oxygen in water and 5 oxygen balanced in nascent oxygen. KMnO4 with H2SO4 में KMnO4 H2SO4 के through जो nascent oxygen मिलता है that comes from the KMnO4. It means that H2SO4 does not give any nascent oxygen of its own to oxidize the reducing agent. Correct. Clear? काफी important था because it clears all the concept of why is sulfuric acid preferred over HCl and HNO3. Then समझा? Yes, sir. Sixteen. Select the substance which is used to convert manganese Mn2 plus into permanganate MnO4 negative. Peroxide in acidic medium, lead dioxide in acidic medium, NaBiO3 in acidic medium, dichromate in acidic medium. We have to oxidize the manganese in the +2 to the +7 oxidation state. So we would require a good and a strong oxidizing agent. अब एक strong oxidizing agent का identification क्या है? It should be in high oxidation state. It should be in the highest oxidation state. अगर कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो सिर्फ रिडक्शन अंडरगो करेगा एंड इट वुड बिहेव एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. So which are the possible substances which could be used? This Dichromate. peroxide
डाइक्रोमेट, और what is max oxidation state of bismuth? +5. एंड NaBiO3 में Bi का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5. हाईएस्ट में है. Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्स +4. +4. और लेड डाइऑक्साइड में लेड अपने +4 में है. व्हाट अबाउट परऑक्साइड का ऑक्सीजन? -1. -1. ना -1 मतलब दिस इज द मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट. मतलब दिस could actually behave as both, na, oxidizing as well as reducing agent. Correct. The peroxide won't be that strong to convert the manganese into permanganate. PbO2. Hello. Hello. Yes, sir. Connection got lost. So manganese could be converted into permanganate by the use of the strong oxidizing agents. So we have the probable options as lead dioxide, bismuth, NaBiO3, and the dichromate, all in the acidic medium. They could be used. Yes, so the answer would be option B, C, and D. Again, in the answer case, they have given only B and C. It should be B, C, and D. Now, integer type, there is a reaction of KMnO4 oxidizing the thiosulfate to sulfate as per the reaction. And we have to find the stoichiometry associated with permanganate. तो सिंपल redox balancing के related है, so एक बार quickly discuss भी कर लेते हैं so that it is also a revision. Permanganate and thiosulfate in aqueous medium reduces to manganese dioxide. The thiosulfate oxidizes to sulfate and the medium of the reaction is alkaline. So now to get the stoichiometry क्या करेंगे? First step, Balance the sulfur. very good. Balance all element except oxygen, hydrogen. तो तुरंत यहाँ पर सल्फर को बैलेंस कर देंगे. First step. Next, So in a given reaction, just balance the charges. okay, there is only one unknown. That could be done. Yes, could be done. They have given X. They have already given thrice 1. This is X 6 and twice. So minus X minus 6 equals to minus 12 and minus 2. So X will be equal to plus 8. ये भी एक करेक्ट मेथड है बिकॉज बाकी स्टोइशियोमेट्रीज दिया गया था. मान लो अगर ये स्टोइशियोमेट्री नहीं दिया तो हम अपने रिडॉक्स के मेथड से कर ही सकते हैं. ठीक है, तो वो मेथड से भी कर लेते हैं. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज चेंजिंग फ्रॉम 7 to 4 and the sulfate, sorry, sulfur in thiosulfate is +2 and increasing to +6. और यहाँ पे हम ट्वाइस लिखेंगे. तो डिक्रीज है -5 का, इंक्रीज है 8 का, इंटू 2 करेंगे राइट. तो अब 5 वाले को 8 से मल्टीप्लाई करो, यही अपना अननोन था तो ये तो मिल गया. तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 and this will be multiplied by 5.
ये हो जाएगा आपका 2268. Oh, sorry, ये 3 है. So this will be 3 and this will be 6. ठीक है. उसके बाद ऑक्सीजन के लिए वाटर देखते हैं हम लोग. सो 8 4 ज़ा 32 एंड 3 3 ज़ा 9. वैसे ये सब करने की जरूरत नहीं है. इन केस आपको वाटर और हाइड्रोक्साइड के लिए पूछा तो उसके लिए जस्ट आई एम डिस्कसिंग. So 8 4 ज़ा 32 and 3 3 ज़ा 9 41. 8 2 ज़ा 16 and 24. So that is 40. तो 1 H2O आएगा और 1 H2O के लिए 2H plus and then 2OH minus on both sides. So finally आपका जो balanced reaction है वो कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है. इसमें charge balancing would be a much simpler method because बाकी stoichiometric coefficients दिया गया था. Then we have 19th. Following steps are involved in manufacturing of potassium dichromate. So we have a compound X which is chromite ore. I would write the formula FeCr2O4 or a mixed oxide FeO.Cr2O3. So potassium dichromate को manufacture करने के लिए chromite was fused with sodium carbonate in the presence of air. That is, it was undergoing roasting reaction with Na2CO3 का presence. ठीक है. So what is the solid mass? Which compound is formed in the first step? Na2Cr2O7. नहीं, Cr2O4. Cr2O4 नहीं होता है, CrO4 होता है. Chromate is CrO4, dichromate is Cr2O7. Na2Cr O4 chromate. The solid mass is chromate. Then यहाँ पर it's added with water and filtered. अब जब इस aqueous solution को filter किया गया तो दो compound separate हुआ. One is a brown residue and other is a solution Y. So if you remember, when you fuse with sodium carbonate in presence of air, the Fe wala part gets converted into पूरा reaction क्या था? Fe2O3. हाँ, so Na2CrO4 plus Fe2O3 and plus carbonate है तो CO2 निकलेगा. Right? अब यहाँ पर when it is added with water and filtered, this तो will vaporize as a gas. अब ये दो compounds जो है वो separate off हो जाएंगे. So which is the brown residue and which is the solution over here? Of course, Fe2O3 rust के related है ना, तो brown residue Fe2O3 का मिलेगा and the solution which they are talking about would be Na2CrO4. This Na2CrO4 is treated with H2SO4. So in acidic medium, what happens? Chromate to dichromate. सोडियम का सल्फेट बनता है एंड क्रोमेट चेंजेस टू डाइक्रोमेट. ये सोडियम का डाइक्रोमेट बनता है जो KCl के थ्रू डबल डिस्प्लेसमेंट करके K2Cr2O7 में कन्वर्ट किया जाता है. सो दिस इज Y, sorry, this is Z and this is Y. अब क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम बिटवीन X and Z. What is the difference in the oxidation number? This is X and this is Z. 1. How? Sorry. 0. नहीं. What is the oxidation state of chromium in chromite ore? +3. And what is the oxidation number of chromium in dichromate?
plus 6. मैक्स में है ना, तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन एक्स एंड जेड, इट विल बी इक्वल टू 3. क्लियर? Yes, sir. So just a sequence of reaction was given and it is related to the manufacturing of potassium dichromate. First step is roasting in the presence of carbonate. Second is chromate changing to sodium ka dichromate and then double displacement sodium dichromate changing to potassium dichromate. इसके दो steps यहाँ पर दिए गए थे. Now comprehension type. Green solution of potassium manganate turns purple and brown solid is precipitated when CO2 is bubbled into the solution. Green solution of potassium manganate यानी K2MnO4 turns purple and brown solid is precipitated. Purple coloration is definitely due to what? Permanganate. Permanganate, MnO4 negative. And the brown solid is precipitated. Which could be the brown solid? And when CO2 is bubbled into the solution. Can you think about the reaction which they are talking about? Disproportionation. Okay, and कैसे strike हुआ आपको disproportionation है? It's turning into permanganate, that's why. Okay, good thought. So manganate to permanganate, there were two conversions. One via disproportionation, which requires which medium? कौन से मीडियम में परमैंगनेट डिस्प्रपोर्शनेट होता है इनटू मैंगनेट एंड MnO2? There were only two conversions, बाबा. मैंगनेट इनटू परमैंगनेट. एक था डिस्प्रपोर्शनेशन और दूसरा था इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, राइट? एंड ये जो डिस्प्रपोर्शनेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी फेमस है. तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन विच मीडियम डज द मैंगनेट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन? Acidic. हाँ, बस वही तो पूछ रहा हूँ. MnO4 2 negative in acidic medium undergoes disproportionation into permanganate and pyrolusite along with H2O. This is a very, very important disproportionation reaction and one of the preparation method of permanganate. तो यहाँ पर ये जो CO2 bubbled into the solution बोला है, what is the purpose of CO2 being bubbled in the solution? To form carbonic acid. To provide the acidic medium in the form of carbonic acid. तो यहाँ पर H2CO3 जो बनता है वो इस रिएक्शन के लिए acidic medium provide कर रहा है. And that's the reason the brown solid they are talking about is manganese dioxide. ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली एसिडिक मीडियम को CO2 बबल्ड इन द सॉल्यूशन के वर्ड के फॉर्म में दिया था. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थॉट टू बी अप्लाइड. So now let's look at the questions of comprehension type 20th. Purple color is due to formation of MnO4. permanganate. Option B. 21. Brown solid is precipitated because of
This is purple solution and this is the brown solid, that is manganese ka dioxide, A. 22. Above changes observed when CO2 is passed into aqueous solution of the given ion. Function of CO2 is A. A. It makes solution acidic due to the formation of carbonic acid. बहुत सही question है. Very good question. Then given experiment involves Disproportionation. disproportionation. And what happens when CO2 is passed into aqueous chromate solution? Converts to dichromate. And that's the funda of ACD. Dichromate and chromate exist in equilibrium in neutral medium. But when the medium is acidic, the chromate changes to dichromate and the solution turns orange red. And in the basic medium, the dichromate changes to chromate and the solution turns yellow. ठीक है, तो यहाँ पर भी इनडायरेक्टली जो एसिडिक मीडियम है वो वाया कार्बोनिक एसिड के थ्रू दिया था. So remember, CO2 bubbled into the solution means the solution is acidic. Moving to 6.3. Sixth one, single correct type. Select the correct matching. Monazite is an ore of thorium, pitchblende uranium, sphalerite zinc. Now ये correct है because monazite जो है that's an ore of thorium का dioxide. Pitchblende is an ore of uranium in the form of U3O8. Oxocation है ये. और sphalerite is an ore of zinc which is in the form of zinc blend, that is zinc sulfide. So just remember this: monazite, thorium dioxide, pitchblende is uranium oxide or triuranium octoxide, and sphalerite is zinc blend. Seventh, gadolinium has the configuration given 4F7, 5T1, and 6S2. Outside the xenon core, find spin magnetic moment of gadolinium 3+. So the 3 electrons which are lost in gadolinium 3+ will be from 5D and 6S. 5D and 6S. That is why gadolinium 3+ में 4F7 होगा and all will be unpaired. So the spin magnetic moment in terms of Bose magnetron would be equal to root of 7 into 9. That is root of 63. So F block के inner transition metals जो है, they will have a very high magnetic moment in comparison to the D block transition metals. Because D block can have a max value of root of 35, but Ds can have a max value of root 63. The answer is option A. 9. All actinoids have high densities except thorium and americium. Except thorium and americium. Density high होने का reason ये है कि the molar mass of this inner transition actinoids is high.
That is why the density is higher in comparison to lanthanoids and the D block metals as well. But thorium और americium में abnormal structure होने की वजह से उनकी densities exceptionally low है. Exceptionally low है thorium and americium. Then 11th, mish metal. Mish metal is an alloy of which was the element present in major proportion? Lanthanides. Lanthanide. ये alloy है lanthanoids का और उन lanthanoids में highest proportion किसका है? Okay, शायद मैंने नहीं दिया है. तो lanthanoids में the highest proportion is of cerium followed by lanthanum and then D block का iron है plus hardness बढ़ाने के लिए there is non-metal carbon also present in the smaller proportion. So decreasing proportion में mish metal is an alloy of cerium, lanthanum, iron with small amount of carbon. So cerium and lanthanum are important lanthanoids present in mish metal. Answer is C. 12th one. The main reason for larger number of oxidation states exhibited by actinides than the corresponding lanthanides is Lesser energy difference between between 5F and 6D, then between 4F and 5D. So almost 5F, 6D और 7S का जो एनर्जी लेवल्स है वो सेम है. इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कैन बी लॉस्ट फ्रॉम इवन द 5F orbitals and that is why they can show an oxidation state which is up to a max of +7. So lanthanoids can show larger number of oxidation state and also magnitude wise uska higher oxidation state is much greater as compared to the lanthanoids. So this is A. Multiple correct, 13th one. Select the correct option with respect to indicated properties. First one, cerium, gadolinium, lutetium, hydroxides, basic strength decreasing. Is it correct? True. Hmm? True. True. And this is as per what effect? This is because of which effect? The basic strength of the hydroxides of lanthanoids go on decreasing from lanthanum to lutetium because of lanthanide contraction. so the effect due to which this happens is lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction का दो ही effects है, एक तो chemical twins का और दूसरा है decrease in basicity of the hydroxides. That's it. So it is due to lanthanoid contraction and the correct answer here option A is correct. Next, UO2 2 plus, UO2 plus and UF4. Oxidation number of uranium in fluoride and oxocations in the decreasing order. Is it correct? है कि नहीं? True. क्योंकि जस्ट अगर सिंपल कैलकुलेट करो तो x माइनस फोर इक्वल टू +2 तो ये हो जाएगा +6, x माइनस फोर इक्वल टू +1 ये हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा +4. तो यूरेनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है. और ऐसे स्पीशीज जिसमें ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव चार्ज आता है दे आर ऑक्सोकटायंस और ऐसे स्पीशीज जिसमें ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज आता है उनको बोलते हैं ऑक्सो अनायंस. रिमेंबर दैट.
These are oxocations. Then cerium 3+. नेक्स्ट में वो Pa नहीं Pr होना चाहिए. Pr 3+, Fe 3+, and lutetium 3+. The size of lanthanide ions. Size of lanthanide ions. Will it be correct? Fe is not a lanthanide. Yes. Fe is not a lanthanide, it's a D block element. अब या तो यहाँ मिस्टेक है बिकॉज दे आर गिविंग दिस एज अ करेक्ट ऑप्शन. तो अगर Fe की जगह कुछ और lanthanide को हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें, then this might be a correct order provided it is in the decreasing order of the lanthanide elements. But as per the trend given Fe and they are asking to compare the size of lanthanide ions, it can't be true. तो सी यहाँ पर डेफिनेटली करेक्ट नहीं माना जाएगा. तो ये भी एक करेक्शन है. एंड देन स्कैंडियम, इट्रियम एंड लेंथनम एंड लुटेशियम का साइज. स्कैंडियम, इट्रियम, approximately lanthanum, and then lutetium. Tell me how they are placed in the periodic table. Scandium, below that is yttrium. Yes. Then Below that is lanthanum. these are simply the first element of the transition series, first, second and third. और lanthanum से आगे जाएंगे तो हमारे पास lanthanides का लास्ट एलिमेंट lutetium है. फिर हैफनियम टू मर्क्यूरी अपना डी ब्लॉक कंटिन्यू होता है. तो ऑब्वियसली साइज अगर कंपेयर करेंगे तो what should be the order for scandium, yttrium and lanthanum? 3+. Increasing. It's increasing definitely. And towards the lutetium, Decreases. decreases. And can yttrium be approximately equal to lanthanum? Can this be true? Okay, now is yttrium and lanthanum involved in lanthanide contraction? No, sir. No. जो lanthanide contraction है वो तो post lanthanides का इफेक्ट है. मतलब when we talk about lanthanide, cerium to lutetium, इसके बाद जो hafnium आता है, because of the contraction in the atomic and ionic radii, the hafnium का size becomes comparable to zirconium. Niobium becomes comparable to tantalum. Molybdenum becomes comparable to tungsten. These are called chemical twins. तो yttrium और lanthanum के 3+ आयन में of course lanthanum बड़ा है, ये अप्रॉक्स इक्वल नहीं हो सकता. तो दिस कांट बी ट्रू. So the correct option is only A and B. क्लियर. अगर आपसे यहाँ पर जर्कोनियम और हेफनियम में अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइन दिया होता या नायोबियम टेंटेलम में या मोलिब्डेनम टंगस्टन में, डेफिनेटली दैट कुड बी करेक्ट. ठीक है. 14th you can cancel. 16th 14 कैंसिल कर लो. पायरो फोरिक अलॉय नॉट टू बी रिमेम्बर्ड, जरूरत नहीं है. Which of the following statements are correct about actinoids? Actinoids are strongly paramagnetic, but the magnetic susceptibility values are lower for the actinoids than the lanthanoids.
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब अगर किसी सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है दैट magnetic strength in the applied magnetic field is referred as magnetic susceptibility. तो सबसे पहले बताओ actinoids and lanthanoids में which will be more paramagnetic? Where the number of unpaired electron could be more to give a higher magnetic moment. It's same in both. It's approximately same because if you read the statement, it's given, it's almost parallel. It's almost parallel. But when we talk about magnetic susceptibility, meaning the material retaining the magnetic strength in the applied magnetic field, that magnetic susceptibility for actinoids is more than the lanthanoids. It's more. तो स्टेटमेंट भी अगर आप देखोगे इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद एक्टिनॉइड्स देन इट्स गिवन अबाउट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ठीक है, ससेप्टिबिलिटी मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैसा रहेगा. तो इफ यू रिमेंबर वन ऑफ द क्वेश्चन वी हैड टॉक्ड अबाउट कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गेट अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन. और जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन अलाइन होंगे इन सेम डायरेक्शन they will have more of magnetic strength for the substance as compared to the applied magnetic field. ऐसे एक्टिनॉइड्स के केस में ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होता है. ठीक है, सो ऑप्शन ए विल नॉट बी करेक्ट. थोरियम एंड अमेरिशियम हैव हाई डेंसिटी. False. False. We just talked about all actinoids have high densities except the थोरियम एंड अमेरिशियम. एक्सेप्शनली लो डेंसिटी वहां पर ऑब्जर्व किया गया है, तो बी भी करेक्ट नहीं है. All actinoids are strong reducing agents. All actinoids are strong reducing agents. Now, actinoids में +2, +3, +4 के अलावा there are other oxidation states which are possible and the max it can go is up till 7. मतलब जो lower oxidation states है they tend to undergo oxidation into the higher oxidation state because जो 5f का इलेक्ट्रॉन है वो निकालना comparatively easier है. And that is why, because electron loss is easier, their oxidation is easier. And because oxidation is easy, they can undergo the they can behave as a reducing agent. तो सारे actinoids strong reducing agent है, ये actually completely correct नहीं है. But most of the actinoids in the lower oxidation state tend to behave as good reducing agents. All वर्ड जो है that is not completely correct. तो ये भी incorrect है. And they show great structural variability. Yes. Actinoids में structural variations काफी ज्यादा है as compared to lanthanoids. So the only correct option is D और यहाँ पर भी correction है. Answer is only D. 17. Which of the following lanthanoids show +2 oxidation state besides the characteristic oxidation state of +3 of lanthanoids? +2 कौन कौन बताता है?
What was the mnemonic to remember the species which can show +2 oxidation state or lanthanoids? SETY. Set Y. बस ऐसे ही याद रखना है आपको. So it was Samarium europeum. This T was for whom? Thulium था कि टर्बियम Terbium. था? नहीं, यही कंफ्यूजन है और यहाँ पर मैंने बोला था ध्यान रखना. अब ये याद इजीली रख सकते हो कि ये T के साथ Y इज इटरबियम और इटरबियम के साथ होता है थूलियम. इटरबियम के साथ थूलियम होता है, तो दिस T इज फॉर थूलियम यानी TM एंड Y इज फॉर इटरबियम. और +4 का न्यूमोनिक वाज Cool place to dance. cool place to dance, that is cerium, praseodymium. Now this is Terbium. टर्बियम एंड डिस्प्रोसियम. टर्बियम डिस्प्रोसियम के साथ होता है, थूलियम इटरबियम के साथ होता है. ये टुवर्ड्स द एंड आता है और ये मिडल के आसपास आता है. ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए प्लीज. ठीक है, और एक ही ऐसा एलिमेंट है विच कैन शो ऑल द 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स. विच एलिमेंट showed all 3 oxidation states? European. नहीं, यूरोपियन में तो +2 और +3 होता है. And D, neodymium is the only element which shows all the 3 oxidation states. ये 3 चीज का समरी मैंने आपको बताया था कि +2 is shown by set Y, +4 is shown by CPDD. Only one element shows all the 3, that's neodymium. And +2 वाला +3 में जब aqueous solution में ऑक्सीडाइज होगा तो दे विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड +4 जब रिडक्शन करेगा इट विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. समझा? Yes, sir. So the answer will be option B and C. नाइनटीन में जो कैटलिस्ट है उसमें से कुछ कैटलिस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड सम ऑफ देम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, तो जैसे जैसे ये खत्म होगा तब ये कैटलिस्ट आपको समझ में आ जाएगा. एज ऑफ नाउ जस्ट ऐसे ही गो थ्रू करोगे तो चलेगा. 20th, C2H5 X and Al along with TiCl4 forms the basis of Ziegler-Natta catalyst, and what will be the value of X over here? 3. It was triethyl aluminium and titanium tetrachloride. So X ka value is equal to 3. 21. Second and third triads meaning group of 3 elements. So second and third triads of group G collectively are called platinum metals. So this G is what? कौन सा group होगा ये? The first triad of the similar elements is present in 3D transition series. And which were the 3 elements having very similar properties in the 3D transition series? Aconi. Paconi. This is called first triad. First triad. अब वैसे ही second triad मतलब the 3 elements below these and the next triad that is in the 5D series. तो फेकोनी के नीचे है रूटेशियम, रोडियम एंड निकल के नीचे Palladium. पैलेडियम, और पैलेडियम के नीचे Platinum. प्लैटिनम. एंड उसके पहले द 2 एलिमेंट्स हैविंग द मैक्स डेंसिटी. Osmium and iridium. बस दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर.
ओसरू का एक और कॉन्सेप्ट भी था, दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच शो अ मैक्स Oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे फेकोनी में सिमिलैरिटीज है, वैसे रुटेशियम, रोडियम, पैलेडियम और ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम में भी सिमिलैरिटीज है। तो इनको बोलते हैं ट्रायड्स। दिस इज फर्स्ट ट्रायड, सेकंड ट्रायड एंड थर्ड ट्रायड। अब ये तीन एलिमेंट्स जो है इन द ओल्डन नोमेनक्लेचर वाज प्लेस्ड इन अ कॉमन ग्रुप। व्हाट वाज दैट ग्रुप कॉल्ड? They were condensed into one group and that group was group number 8। ठीक है, ये ओल्डन नोमेनक्लेचर है। अगर वैसे इसका ग्रुप हम कंसिडर करें तो इट विल बी 10th, 8, 9, 10। ये एक्चुअली ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9 और ग्रुप नंबर 10 है। निकल के आगे कजिन आएगा विच इज ग्रुप नंबर 11 एंड 12। ठीक है, सो यहाँ पर पूछा है कि सेकेंड एंड थर्ड ट्रायड्स ऑफ ग्रुप जी कलेक्टिवली आर कॉल्ड प्लैटिनम मेटल्स। तो ये जो प्लैटिनम मेटल्स है इसका ग्रुप क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली ग्रुप नंबर की अगर बात करें तो एज पर द IUPAC नोमेनक्लेचर द प्लैटिनम मेटल्स इज इन ग्रुप 10। गोल्डन नोमेनक्लेचर के हिसाब से 8 है। दे हैव गिवन द आंसर एज 8, मतलब दे आर रेफरिंग टू द ओल्डन नोमेनक्लेचर, बट ये एम्बिगुअस क्वेश्चन है। ये कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ प्रॉपरली मेंशन नहीं किया है, बिकॉज एज पर द नंबर इट इज ग्रुप नंबर 10। क्लियर? तो यहाँ पर विल गो विद द answer as 10 only, that is related to the IUPAC nomenclature. And comprehension type is simple for the lengthenite contraction related questions. तो देख लेते हैं। 22nd, the lengthenite contraction relates to contraction of what? Atomic radii. Only atomic radii? The gradual decrease in the atomic and ionic sizes of the lanthanides with the increase in nuclear charge due to the poor shielding of the 4f electrons is called lanthanide contraction. That's atomic as well as M3 plus radii, ionic radii का भी तो concept है ना, इसलिए तो हम बोलते हैं Zr+4 and HF+4 have almost a similar radii. It's related to both. And the properties of Zr and HF are similar because Both have similar radii. of the same radii. Which of the two almost have similar size? Niobium and tantalum. NBTA का chemical twin pair. And 25, which is not correct. LaOH thrice is less basic than LuOH thrice. No. No, यही false है, यही आंसर है। इसका मतलब बाकी तीन स्टेटमेंट करेक्ट है। Let's verify. In lanthanide series, ionic radii of Ln3 plus ions decreases. Yes. La is actually an element of transition series rather than lanthanide series. ये तो मैंने आपको बहुत specifically बोला है कि La is always discussed along with lanthanides, but remember that La is a D block element and not F block element. The atomic radii of Zr and HF are same because of lanthanide contraction. Yes, that exist as chemical twins. Clear? So 24 is B. 24 is B, yeah. Okay, 6.4 is not to be done as I told last time also because there are most of the questions, most नहीं पूरा ही questions जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉलेज के बिना सॉल्व नहीं कर सकते।
once we complete coordination compounds and also the analysis related concepts, एसिडिक बेसिक रेडिकल्स का एनालिसिस वाला पार्ट भी है इसमें, तो जब तक वो नहीं होगा विल नॉट बी एबल टू डिस्कस 6.4. तो टेस्ट के लिए भी ओनली 6.3 तक ही है आपको, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेना. ओके